Hello everyone. So today I'm going to discuss with you exercise 1.4 of chapter real numbers. So here is first question. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो बिना हमें long division किए हुए बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे. Okay, so we all know that rational number can be written P upon Q form and where Q is not equals to 0. तो अगर हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा एम क्यू हमेशा इसके फॉर्म पर होगा. ओके, तो अगर इस फॉर्म पर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. बट इफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n into 5 is raised to m, अगर Q इस फॉर्म पर नहीं है तो वो क्या होगा, तो फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. तो यहाँ पर पहला पार्ट है 13/3125. तो 3100 हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि क्यू कितना दिया हुआ है 3125. तो हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब, सो वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया डिनोमिनेटर का. तो यहाँ पर 5 हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, सो 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 है यहाँ पर. सो वी राइट हियर 5 इज रेज टू 5. सो हियर q किस फॉर्म पर है, अगर हम देखें तो q2 इज रेज टू n इंटू 5 इज रेज टू m की फॉर्म पर है, जहाँ पर n और m होल नंबर्स हैं. तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, सो देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग. तो इस वजह से क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज 17/8. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द prime factors of 8. So 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s 2. So we write here 17 upon 2 cube. So here denominator is in the form of 2 raised to n into 5 is raised to m. अब डिनोमिनेटर इस फॉर्म पर है, सो देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट इज 64/455. 64/455. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 455 जो डिनोमिनेटर है. सो वी राइट हियर 64/455. आई हैव डन हियर ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे पहले से ही कर दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन. सो वी गेट 5 into 7 into 13. So here denominator is not in the form of 2 is raised to n into 5 is raised to m. So therefore this is non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. Next is 15/1600. तो जब हम 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6. 2 is raised to 6 into 5 square. सो हियर डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म पर है, 2 is raised, हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 is raised to n into 5 is raised to m. So therefore this is terminating. तो इस वजह से क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. So now next one is that 29/343. 29/343. So प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 343 का तो हमें मिलेगा 7 क्यूब. So here denominator is not in the form of 2 raised to n into 5 is raised to m. So therefore this is non-terminating repeating decimal expansion. So next one is 23/2 cube
इंटू 5 स्क्वायर। तो हेयर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n इंटू 5 इज रेज टू m। So therefore this is terminating decimal expansion. Next is 129 upon 2 square, 5 is raised to 7 and 7 is raised to 5. So here q is not in the form of 2 raised to n into 5 is raised to m. So therefore it is non-terminating. So therefore it is non-terminating repeating decimal expansion. So next one is that 6 upon 15. So first we reduce is 3 2 times and 3 5 times. So we get here 2 upon 5. So here denominator is in the form of 2 is raised to n into 5 is raised to m. So therefore this is terminating decimal expansion. Next one is 35 upon 50. So 5 7 times, 5 10 times. So that means we get here 7 upon 10, and that means 7 upon 2 into 5. Two into 5. So here denominator is in the form of 2 is raised to n into 5 is raised to n, where n and m are n and m are whole numbers. So therefore this is terminating. Next is 77 upon 210. So we find the prime factorization of 210, then we get 2 into 3 into 5 into 7. So here q is not in the form of 2 is raised to n into 5 is raised to m. So therefore this is non-terminating repeating decimal. So next question is write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. So question number 1 में जितने भी terminating decimal expansions हैं उनको हमें decimal में convert करके लिखना है. So first one is 13 upon 3125. So in last sum we have already done this. So this can be written as 13 upon 5 is raised to 5. So in next step what we do, we simply multiply denominator and numerator by 2 is raised to 5. हम किससे multiply कर देंगे, 2 is raised to 5 से multiply कर देंगे. So we can write 13 into and 2 is raised to 5 means 32, and this can be written as 5 into 2 is raised to 5. So that means 13 into 32 करेंगे तो then हमें मिलेगा 416 upon 10 is raised to 5, and that means 416 upon 1 and 1 2 3 4 5 zeros. अभी हमें डेसिमल सब्सटीट्यूट करना, डेसिमल पुट करना है. सो वी राइट हियर 416 and how many zeros are there? So 1 2 3 4 5 zeros are there. तो from the left most hand side 5 digits के बाद हम क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे. तो 1 2 3, अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, so we write here 0. So now 1 2 3 4 5. So then the answer will be 0.00416. And then the next one is 17 upon 8. So we can write this 17 upon 2 cube. अब इसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. So then we get 17 into 125 upon
2 into 5 cube. And when we multiply 17 and 125, then we get 2125 upon 10 cube. So that means 2125 upon 1000. Now we substitute the decimal, so we can write 2.125. So now next one is 15 upon 1600. So next one is 15 upon 1600. So this can be written as 15 upon 2 is raised to 6 into 5 square. So we can write this 15 upon 2 is square into 5 is square into 2 is raised to 4. हमने 2 is raised to 6 को डिवाइड कर दिया है, 2 is raised to 2 and 2 is raised to 4 पे. So in next step we can write 15 upon 10 square into 2 is raised to 4. अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 अब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 5 is raised to 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So then we can write 15 into and 5 is raised to 4 means 625. So now we can write 10 square into 10 is raised to 4. So that means when we multiply 15 and 6 to 5, then we get 9375 upon 10 is raised to 6. So after 6 digit from the rightmost hand side हम decimal substitute कर देंगे. So we write first 9375 and 2 zeros, then substitute decimal 0, and this is the answer. So next one is 23 upon 2 cube into 5 square. तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सो 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अपॉन 5 से. सो वी गेट हियर 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 1 11, 115 upon 2 cube into 5 cube. So this can be written as 115 upon 10 cube, and which means 115 upon 1000. So when we convert it in decimals, we get 0.115. So next one is 6 upon 15. So first we reduce this to 3 2s and 3 5s. That means 2 upon 5. So हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 2 से. So we get here 4 upon 10, and that means 0.4 is the answer. And next one is 35 upon 50. We reduce it by 5. So 5 7 times and 5 10 times. So we get here 7 upon 10, and when we convert it 7 upon 10 in decimal, so we can write 0.7, and this is the answer. So now next question is that the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. हमें बताना है कि वो हर एक केस में रेशनल है या नहीं है. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? So first one is 43.123456789. So this is a terminating decimal. ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सो इट कैन बी रिटन इन P upon Q form. We can write this can be written in P upon Q form. Okay, and what can you say about the prime factors of Q? So if we talk about the prime factors of Q, so Q का जो prime factors होगा वो 2 is raised to n and into 5 is raised to m की फॉर्म पर होगा. So as
this is 0 point second one 0.1201200120012 and this goes on. So as there is no any pattern, so this is non-terminating non-repeating decimal expansion. So this cannot be written in P upon Q form. Now if you talk about its a third part, so that is 43.123456789 bar. So we can say that this is non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. So it can be written in P upon Q form. So if it can be written in P upon Q form, so Q yani ki which is denominator, and if we talk about here denominator, so this denominator is not in the form of 2 is raised to n into 5 is raised to m, and that means इसका मतलब क्या हो गया कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी कि अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will also have a factor other than 2 or 5. एक और भी फैक्टर होगा other than 2 or 5. Okay, thank you everyone.